Shall now we start the topic. Characteristics of an ideal cost accounting system. यानी एक आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या characteristics हैं. An ideal cost accounting system should have following characteristics. पॉइंट्स दिए हुए हैं. देखिए, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है या कोई भी जो भी प्रणाली है, उसको एक आइडियल तभी कहा जाता है जब वह जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट को सही तरीके से उसे पूरा किया जा सके और जो व्यवसाय यानी बिजनेस का जो मेन एम है उसे अचीव किया जा सके. जैसे नंबर 1 सिंप्लिसिटी, इसे सरलता कहते हैं. देखिए, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरीके से व्यवस्था है वो इजी एंड स्पष्ट यानी सरल एंड स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसको किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सके. और cost accounting system should be simple and clear so that it may be understood even by a man of general wisdom. If its procedure is complex, it would be difficult to get the cooperation of the in its successful implementation. Thus, the system should be quite and simple, जिसे आसानी से समझा जा सके. Next, elasticity. This system should be quite elastic so that the necessary changes may be possible as are required from time to time in the business. Next फीचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलास्टिसिटी. ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल्स या कोई भी सिस्टम आपने बना दिया उसे चेंज नहीं किया जा सके. द सिस्टम शुड बी क्वाइट इलास्टिक सो दैट द नेसेसरी चेंजेस मे बी पॉसिबल. नंबर 3 इकोनॉमी. इकोनॉमी नेवर मीन्स lesser expenditure, but it really means proper expenditure. The expenditure on the system should be as much that can be easily bear by the organization and its advantages. देखिए, किसी भी इकोनॉमी का मतलब उसके कम खर्चे से नहीं होता, बल्कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको सही तरीके से किया जाए. जितना एक्सपेंसेस की ज़रूरत है उतना ही किया जाए. इकोनॉमी मीन्स लेसर एक्सपेंडिचर बट इट रियली मीन्स प्रॉपर एक्सपेंडिचर. नंबर 4 एडेप्टेबिलिटी. The necessities of various types of business are different from each other. Thus, the system should be as per requirements, nature condition, necessities and size of the concerned business. The system should be capable of fulfilling all the necessities so that the product cost may be easily ascertained. Number 5 accuracy.
The utility of the system depends on its accuracy. Thus, to obtain the desired result, the system should be quite and accurate. कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट आता है prompt reports. The system should be such which can provide the concerned business report promptly so that the management may take decision at the right time to control the cost. Next, classification and analysis. For the success of the system, it is necessary that the correct and appropriate classification of expenses relating to the production, administration, selling and distribution should be done to lay their reasonable burden on each product. Last, reconciliation with financial account. The system should be provide all those information which may be required to reconcile that result with the financial accounts so that cause of difference in result, if any, may be find out. कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें जो भी कॉस्ट अकाउंट्स हैं उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका इजीली मिलान किया जा सके जिससे उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट ना हो. नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्टिंग सिस्टम. फॉर installing a costing system in a manufacturing organization, the following procedures should be adopted. Number 1, study of technical characteristics. While selecting a method of costing, a technical characteristics of organization such as nature of the material, capacity of the plant, nature and quality of labor, etc. should be properly considered because all these aspects affect the type of costing system to be adopted. देखिए लागत निर्धारण एक तरीके से उसका सेलेक्ट करते समय ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे कि उसके मटेरियल है, प्लांट है, लेबर है, इन सभी की बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावित ना हो. नेक्स्ट, number 2, study of nature of the product. The nature of the product also affect the selection of a costing system. Thus, the nature of product should be well studied. देखिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस की जाने वाली कोई भी वस्तु की कॉस्ट उसकी एक तरीके से निर्धारण जो पद्धति है उसके चयन को प्रभावित करती है. नेक्स्ट, ascertainment of cost center. Cost center means any such center where the records of total expenses of a group are maintained. A cost center is a group of department, sections, equipments, machines or persons for which data are collected. Cost center may be of several types such as personal,
impersonal process, etc. For installing a costing system, establishment of cost center to ascertain the cost at every center is essential. Next, ascertainment unit of cost. The cost center is related to place, person, equipment, etc., while the unit cost is concerned with the product or service. Next, determination of the procedure relating to the cost. It means in a big business, cost accounting system should be widely employed, while in a small business, its short form should be adopted. It is required so that the installation expenses of costing system may not be more than the utility of the business. Next, determination of forms of document. Before selecting a costing system, it is necessary to determine the standard and forms of documents to be used in the organization. The documents and forms to be used may be different colors that they may be easily recognized. Next, determination of forms of report. Important information are sent to management through cost accounts. The information are sent in the form of various statements and reports. Next or last, determination of the status of cost accountant. Before installing a costing system, it should be decided as to what shall be the right and liabilities of the cost accountant, that is, what shall be his status in the organization. It should also be decided as to whom he shall be responsible and whom shall be responsible to him. स्टूडेंट, आज इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में और इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्टिंग सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर में इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके मेथड्स के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट.